साहब, मैं समझी माइक किसी का और ऑन है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने इस सेशन को टाइम दिया और हम सबको टाइम दे रहे हैं वन बाय वन। आई एम श्योर बाकी मेंबर्स जिनके आपने नाम लिए, लंबी फहरिस्त है, वो भी ज़रूर आएंगे और अपना फ़र्ज़ जो फ़लस्तीन और दुनिया के इस वक्त परेशान हाल लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। एक बात तो हमारे सारे दोस्तों ने कही है, बड़ी काबिल आवाज़ें उठी हैं और आज तो ख़ास तौर से तकारीर का लेवल एक अलग ही मयार का रहा है। मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगी, सबको पता है दिल दहलाने वाली मनाजिर वहाँ से रोज़ निकल रहे हैं। आदाद और शुमार भी ऐसे हैं कि दुनिया ने कभी देखे नहीं हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों के हवाले से ही जो हज़ारों में अब शहीद हो गए हैं, सेव द चिल्ड्रन जैसे इदारे ने, जो आलमी इदारा है, उन्होंने भी कहा है कि हमने ऐसी हलाकतें बच्चों की बेदर्दी से नहीं देखी। ये सेव द चिल्ड्रन एक आलमी इदारा है, उन्होंने भी कहा है कि हज़ारों में नंबर्स आ गए और हमें असल नंबर्स का पता भी नहीं है। दीज आर, चेयरमैन साहब, द स्टेटिस्टिक्स ऑफ आवर कलेक्टिव शेम। द कलेक्टिव शेम इज सच कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉयज़ नहीं अंदर जा रहे और ना उनको ले जाने दिया जा रहा है। इज़राइल ग्राउंड पे ग्राउंड अटैक्स, दूसरा ग्राउंड अटैक शुरू कर चुका है। इतनी सी स्ट्रिप रह गई है गज़ा की, जो कहते हैं कि जैसे कश्मीर की तरह कहा जाता है ओपन प्रिजन है, लेकिन वो ओपन प्रिजन नहीं है चेयरमैन साहब। ओपन प्रिजन में कुछ हुकूक भी होते हैं, आने जाने की कैफियत कुछ होती है, बाड़ लगे होते हैं। ये एक ओपन नहीं है, कंसंट्रेशन कैंप बन गया है, जहां उनको जमा कर के और जानबूझ के इनोसेंट सिविलियंस कहते हैं नहीं मारना चाहते, लेकिन ये सब कागजी जमा खर्च है। ये कहने की बातें हैं, ये इनको जानबूझ के दानिस्ता तौर पे टारगेट कर के वहाँ मारा जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि हस्पताल इवैक्यूएट करें, हस्पताल इवैक्यूएट करें। दुनिया की बदतरीन जंगों में हस्पताल और एड कॉन्वॉयज़ ये चलते रहते हैं, दे आर अलाउड। जितने कन्वेंशन जिनीवा और दूसरे वॉर के ये वायलेट हो रहे हैं इस सरजमीन में, मैं समझती हूँ जीती दुनिया ने नहीं देखा। या शायद फिर 12वीं 11वीं सदी में होता होगा, जहाँ लोगों को नजरे आतिश करते थे कि ये जंग है, और उसको डार्क एजेस कहा जाता था, यूरोप के डार्क एजेस, मेडिवल टाइम्स कहा जाता था, इन्हीं वजूहात से। तो आज क्या अंधेरा, जिसे अंधेरा नहीं छा के हमारे दिलों पे भी, हमारे जहन पे भी, हमारी दुनिया पर, कि ऐसा कानून का इस वक्त खिलवाड़ हुआ है इंटरनेशनल लॉ का, जिसका रोज़ मुशाहिद भाई ने भी कहा, सेनेटर साहब ने कहा कि रोज़ हमें दर्स दिया जाता है और कल भी दिया जाएगा। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि कल भी दिया जाएगा। मैं तो अपने पॉइंट्स छोड़ के वो नहीं करना चाह रही कि कोई ओवरलैप हो, बट हमें कल भी ये दर्स दिया जाएगा धड़ल्ले से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑक्यूपेशन वहाँ है इस वक्त, ये ऑक्यूपेशन तो ये अपने मकासद, इतना जंगी बेड़े आए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, वो तो शायद पूरे कर लें, लेकिन ये जंग अब मुसलसल रहेगी। ये जंग अब ख़त्म नहीं होने वाली चेयरमैन साहब। जब आप इतनी बर्बरियत को रियासत के साथ मुंसलिक कर लेते हैं, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, लेट अस कॉल इट व्हाट इट इज। It is state-sponsored terrorism, not terrorism by non-state actors. अगर आपने हमास को कंडेम भी किया, जो रियासतें करती हैं कि दहशतगर्दी को हम कंडेम करते हैं, दहशतगर्दी को करते हैं, लेकिन वो रियासत नहीं है और उन पर वो रूल्स नहीं लागू हैं। The same rules don't apply as they do to a state that is supported by many of the Western powers. And to say, who say now that a ceasefire is not possible, and the UN Security Council, the sessions are running day after day, while children's limbs are being amputated. They are amputating them
under quote unquote slight sedation. What is slight sedation? Is it a little bit of anesthetic in your nose while you're sitting up and they amputate your limb? Is that what these ages have come to? Is that what the 21st century, the whole architecture of human rights as envisioned by the United Nations, the dream after the Second World War, promised us? This is not humanity. This is hell. This is hell on earth. And this is bestiality at its worst. When children are being amputated, their limbs are being amputated sitting up under mild anesthetic, and nobody has refuted this. Al-Quds Hospital is being repeatedly asked to evacuate. The Jews who are standing there, some of them, मैं कहती हूँ आफरीन, वो खड़े not in my name जैसे सेनेटर कुरतुलैन ने कहा not in my name बहुत लोग कर रहे हैं. दुनिया की रियासतें क्या कर रही हैं और दुनिया की अवाम क्या कह रही है, उनमें खुला तजाद है. अवाम हर जगह, आप कोई भी मुल्क का नाम ले लें, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, बस उससे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी सड़कें भर गई हैं. आपका क्या ख्याल है कि ये जंग यहाँ ख़त्म होगी? इराक की तरह जब मुजाहरे होते थे, उनसे बड़े हैं ये. जब ज़बरदस्ती इराक का इन्वेजन हुआ to detect weapons of mass destruction that were not there, they were never found. There is a whole report on that. They were never found. But Iraq is destroyed. It's balkanized. Palestine was also balkanized, Chairman Sahab. But I do want to say, this did not begin this October. एक डेट दी जाती है 7 तारीख की कि this is when it began, when Hamas attacked. Not at all. The mass terrorization of Palestine, its citizens, their denial of a state, when they opened their arms to the persecuted Jews of Europe, they rightly did so. They did so. They opened their arms. They are now being told, get out, or this will be your death. And death भी चले, वो बहुत सारे जो वहाँ रह रहे हैं, उनको मौत और शहादत मंजूर है. अब सितम तो उन पे ये कि वो कहते हैं हमें मंजूर है, लेकिन मंजूरी के बाद अगर दुनिया समझती है कि ये नस्ल कुशी जो है, ये जेनोसाइड जो चल रहा है, इसके बाद ये सब एक शमा की तरह गुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा. तारीख से कोई भी आप मुताला कर लें, जब किसी कौम को इस तरह जिस तरह फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, पहले उनको आहिस्ता आहिस्ता समंदर में धकेला, फिर उनके इर्द गिर्द ये स्टॉकेड बना दिया है, ये मुहासरा हो चुका है उनका, वो अंदर ट्रैप्ड हैं. सो इनोसेंट्स आर ट्रैप्ड and they are being killed every day deliberately, while messaging continues that we are now hitting back for Hamas's attacks. This is also happening beginning in the West Bank, जहाँ कोई हमास के लोग नहीं हैं, सबको पता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके फुटप्रिंट हर जगह जाएंगे. So all I want to say is, what went on in Palestine, in Gaza, will not stay in Palestine. I am not advocating for 1 minute the spread of violent terrorism or any kind of terrorism. But when a people are denied their right to life, not even a state, now they're not, forget the state, they're not being denied a right, they're not being given a right to life. That is what genocide is, friends. Yes. That is exactly what genocide is. When you no longer have a right to life because of your ethnicity. And it's quite right, this is no religious war. This is worse. This is the politics of clear, open oppression. And it is state-sponsored violence, because who dared to challenge the geostrategic brat of the Middle East? Who dared? This is what is going on. And the anger must be taken out.
There is a video running, Chairman Saab, and I'm speaking in English. I wish the Palestinian ambassador was here, because we have all declared solidarity with him. We've all made the right noises. We've all said there should be a two-state solution, there should be an immediate ceasefire, there should be humanitarian entry corridors. We're all saying that. While we say that, all the right things, we feel helpless and distraught at what is being done in front of our noses and eyes. And in that case, Chairman Saab, the one thing to do and say is, do whatever you can. Because the Palestinian ambassador said to me, yesterday I was wearing what he had given, the Palestinian scarf. And what he said was, this matters to us. Even your speeches matter to us because, and your solidarity, because we then feel we are not alone. The People's Party has always stood by Palestine from day one, from Chairman Zulfikar Ali Bhutto to Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. Both our Shohada leaders have, I don't need to repeat it. But Chairman Bilawal also went there and said, you need to know that you are not alone. And he said that is very important for us. So please, if you are concluding tomorrow, if in your infinite wisdom you think it is generous to invite him or correct, then please do so, because I think it matters to them what we say. At least they're not, we feel sometimes they're empty words. And may I also suggest, Chairman Sahab, there's a lot to say. It's being said, it has been said, more will be said. May I also suggest, Chairman Sahab, I'm not sure that more aid will help. But I think they are in desperate need. There's no water, there's no fuel, they're drinking salty water, there's no food, there's no electricity, and then there's always an internet blackout created so to pave the way for an invasion, another invasion. These invasions will continue. We must do our bit. We are standing in the Senate of Pakistan. Across the aisle, there is nothing but solidarity and anguish. So in that solidarity, may I suggest that we all donate at least 1 month of our salary for a humanitarian, for the humanitarian package cause to be sent to them. Deliver whatever we can to this is our job. Whatever we can, if everyone agrees, to the ambassador to convey to his people who are in danger of being wiped out by off the face of this earth by a state-sponsored terrorist regime. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Honorable Senator